In this video, we have to learn introduction to JSP. First of all, the full form of JSP, Java Server Pages. And first thing, what is JSP? The JSP technology is used to create web application just like Servlet technology. It can be through of as an extension to Servlet because it provides more functionality than Servlet, such as expression language, JSTL, कस्टम टेक एक्सेट्रा मीन्स जीएसपी क्या है तो जीएसपी एक टेक्नोलॉजी है इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन ओके एंड जीएसपी सवलेट का एक्सटेंशन वर्जन है एक्सटेंशन वर्जन मीन्स क्या सवलेट के अंदर जो फंक्शनैलिटी थी वो तो जीएसपी के अंदर है बट उससे ज्यादा फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज जीएसटीएल और कस्टम टेक क्लियर then a JSP page is a consist of HTML tag and the JSP tag means जो JSP पेज है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है means HTML tag and JSP tag okay and the JSP page are easy to maintain than Servlet because we can separate designing and development part okay means जो JSP पेज है वो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो कैसे बिकॉज उसके अंदर जो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पोर्शन है आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो okay and it's provides some additional features such as the expression language JSTL custom tag etc okay next topic advantages of JSP over Servlet basically total चार advantages है first one is the extension to Servlet means JSP जो है वो Servlet का क्या है तो extension version है extension version का मतलब क्या होता है कि जो Servlet के अंदर जो functionality थी वो तो JSP के अंदर है ही है बट उससे ज्यादा functionality JSP क्या करता है तो provide okay means JSP technology is the extension to Servlet technology means we can use all the features of Servlet in JSP in addition to we can implicit object predefined tag expression language and custom tag in JSP that makes the JSP development easy okay clear and second advantage is easy to maintain means JSP can be easily managed because we can easily separate our business logic with presentation logic in Servlet technology mix our business logic with the presentation logic means जीएसपी जो है आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो बिकॉज थी उसके अंदर जो डिजाइनिंग पोर्शन एंड डेवलपमेंट पोर्शन वो दोनों आप सेपरेट आउट कर सकते हो ओके एंड थर्ड वन इज दी faster development means no need to recompile and redeployment if the JSP is modified we don't need to recompile and redeploy the project the Servlet code needs to be updated and the recompile if we have to change the look and feel of the application ओके बिकॉज दी जो JSP पेज है दिस इज द वन काइंड ऑफ द HTML पेज और जो HTML पेज में क्या होता है कि आपको बार बार उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई भी कंटेंट को चेंज कर रहे हो देन आप अल्टर टैप करो एंड रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा तो चेंज दैट मीन्स द फास्ट डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन इज द लेस कोड देन द Servlet in JSP we can use many tags such as the action tag JSTL tag custom tag etc that reduce the code okay means we can use expression language implicit object etc okay means जो JSP के अंदर क्या है लेस कोड देन दी Servlet ये Servlet में फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना था तो आप क्या लिखते थे out.println ठीक है अब वहां पे भी ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है आप उसके अंदर जो कोड होगा एकदम लेस हो जाएगा ठीक है दैट मीन्स लेस कोड देन दी Servlet okay means advantages of Servlet technology the total चार advantage है first one is the extension to the Servlet second one is the easy to maintain third one is the fast development means no need to recompile and redeploy and fourth one is the less code than Servlet okay अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी होवे डाउट होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो थैंक यू सो मच